Hello everyone. Hello everyone. Hi Bacho, how are you guys? Am I audible to all of you? A very good evening Hi to all Bacho, of how you. are you guys? Am I audible to all of you? Very good evening. Bacho, how are you guys? Am I audible? Okay, uh, is everything fine? Good evening, guys. A very good evening to all of you. Okay, we are going to do our next topic today, guys. Coding and decoding. This is the next topic that I will be discussing with all of you, right? As I explained to all of you yesterday, that these are the topics that we will be covering for all other management entrance test exam, right? Like MBACET, SNAP, NMAT, every other MBA entrance exam other than CAT. These are the topics I will be covering, right? So first session of blood relation has already been covered in the first part of the video. I'm sure you guys have seen that video, right? First session जो हमने blood relation पे किया था. Today I will be taking the second session of coding and decoding. But it doesn't mean that we are done with all questions of blood relations. I only covered one of the type of blood relation questions which is coming specifically in MBA CET exam. There will be some additional session also on blood relation I will be taking. Today I'm going to cover a specific type of coding decoding question. आज के सेशन में हम कोडिंग डिकोडिंग का एक स्पेसिफिक टाइप कवर करेंगे जो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, सबसे ज्यादा एग्जाम्स में एट प्रेजेंट आ रहा है, राइट? सो दिस इज अ टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चंस that you will definitely find in your paper for sure, right? And this is a completely new type of coding and decoding questions, right? Generally you will not find these type of question in any standard book, because these are the type of questions which have started recently coming in exams. ये जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का, ये एग्जाम में अभी रिसेंटली आने लगा हुआ है, राइट? देर आर कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन जिसमें आपको अल्फाबेट्स के न्यूमेरिक वैल्यूज आनी चाहिए, राइट? देर आर कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन जो लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, right? This is a coding decoding questions where a particular statement is coded in a combination of numbers, alphabets, and symbols, and you have to decode the reasons of alphabet, symbol, and numbers, right? And also this coding is not in a sequence, right? For example, when you look at this particular statement, it says that in a certain code of this particular this combination of four word is coded as this, right? And you can see that each code is made of three things. One is number, one is alphabet, one is symbol, right? Now it doesn't mean that the first word is coded as this. No, it's not that, right? You have to observe, you have to read all the words, you have to find out the similarity between the alphabets and the numbers, and you have to come up with the reason of these codes, right? ये coding के reasons क्या है, वो reasons को आपको find out करना है, and you have to finally find out that pattern, right? वो pattern आपको find out करके इस क्वेश्चन को डिकोड करना, राइट? इस क्वेश्चन का कोड बनाना है आपको. Is it clear, guys? Would you like to try this? This is a completely new type of coding decoding question, guys, right? ये बिल्कुल नया टाइप का कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन है. Would like to try this? एक ट्राई देना चाहोगे? Go for it, guys, right? Let's see how many of you can decode it, right? Right? आपको कोडिंग के रूल्स फाइंड आउट करने हैं. What rules are being followed while coding these words into this, right? Once you find out the rules, अगर आपने ये सारे रूल्स फाइंड आउट कर लिए, वही रूल्स को आपको सीरीज में लिखना है, और रूल्स को फॉलो करते हुए यू हैव टू फाइंड आउट कि इस वर्ड का क्या कोड बनने वाला है. कम ऑन गाइस, गो फॉर इट. आई विल गिव यू 2 minutes टू फाइंड आउट द रीजन, decode the rules of this coding, guys. Come on, go for it. We'll start the discussion, we'll start the solution in a minute. You guys first try this. कुछ आइडिया लग रहा है? If you guys are getting any idea, do let me know. Otherwise, we'll have a discussion on the solution. Comment in the live section.
Exactly. Right, Harsh. That's perfectly fine. Now, once you know which number is, why the number, what is the reason of the number, then you can also identify which particular code is used for which particular word. Yes. And then using that, you can find out the reason of the symbol as well as the first alphabet also. Come on, decode it. Try to find out the reason of the alphabet. Alphabet का reason क्या है? Go for it. Do you see any connection between alphabets and the letters of the word? Followed letter of the last word. Okay. Then now, okay, once you know the reason of the last letter, once you know the reason of the alphabet getting used in the code, and you also know the reason of number. Now using that, try to find out the reason of the symbol. Look for those codes which are using the same symbol. Look for those words which are using the same symbol, and then you will get to know what is the reason of the symbol, right? See this. I'll tell you how to solve this question, guys, right? I guess you have tried this. Now let's have a discussion on the question, guys. See this. First, observe the code, right? The first thing that you need to do is look at the codes that is getting used here, right? Now this code is made of three things. In fact, all these codes are made of three things. One is the alphabet, right? First is the alphabet, right? We need to know the reason of the alphabet. Then the second one is a symbol, right? And finally the third one is a number, right? If this is a combination, it's always easy to find out the reason of the number, guys, right? Try to look for those codes which are using the same numbers. You see that if I look at here in this code is getting ended with the number 2. This code is also getting ended with the number 2. Now look for the reason, right? Look for the reason here. Why the number 2 here, right? Which particular word can be here in this statement or in this combination of word for which the number 2 will be coming. Then you see that here the next code is having the number 3, the next code is having the number 4, the next code is having the number 4. Try to see some similarity. Are these numbers 2, 3, 4 and 4 are somehow connected with these words? If you look at the number of letters in this particular word, you can see that number of letters here are 5. This word is also made of 5 letters. This word is made of 3 letters, and this word is made of 4 letters. Now 5, 5, 3, 4 and 2, 3, 4, 4. Do you see a similarity? Yes, I will get an idea that if I subtract 1 from this number, I will be getting 4. 1 from this number, I'll be getting 4. Subtract 1 from this number, I'll be getting 2. Subtract 1 from this number, I'll get 3. So here you will get an idea that it might be a reason that the numbers are 1 less than the number of letters of that particular word. ये जो number यहाँ पे use हो रहा है, इन letters में से एक subtract करके use हो रहा है. But then you need to cross verify it for other statements also. You see that this complete word is made of 6 numbers. So I should be having a code with number 5. Okay. This is also having 6 letters. So I should be having a code with ending with 5, right? So I should be having 2 codes, in fact, ending with 5. So yes, I have these 2. So I get to know the reason. The reason of number is number of letters in a word minus 1. Once you know this, जब आपको ये reason पता लग गया, now you can find out, right? Now you can find out which particular code is specifically used for which particular word, and then I can try to find out the reason for the symbol and the words. Now you see that this word is having 3 letters gap. So can I say the code of this word must be ended with 2? इसका जो code होगा वो 2 से end होगा. Am I right? Now, and there is only one code which is ending with 2. So that means gap must be coded as Q and this symbol, right? And we have this symbol right here. This symbol has also been used.
Now try to know the reason. You see that is the letter Q is somehow connected with any of this letter? Yes, you can see that P plus 1 is Q. Okay, let's try to see, is this working for other words also? Look at the number chest, right? Look at the word chest. Now chest is having 5 letters. It must be ending with 4. And because the last letter is 2, it should start with U. Am I having a code starting with U and ending with 4? Yes, this is a code. So can I say this must be coded with U hashtag 4? Now you get to know the reason कि कौन सा कोड किस वर्ड के लिए यूज हो रहा है. आपको अल्फाबेट का रीजन पता लग गया. You got to know the number also. अभी सिंबल का रीजन आपको फाइंड आउट करना है. Okay, symbols का रीजन कैसे फाइंड आउट करोगे? Can anybody please tell me what is the reason of the symbol? Symbols का रीजन फाइंड आउट करने के लिए you need to pick कोड जिनमें सेम सिंबल यूज हो रहा है. You pick this code, हैशटैग वाला यूज कर लो. ये हैशटैग यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे भी हैशटैग यूज हो रहा है, राइट? Now tell me, 3 से एंड कौन करेगा और O से कौन स्टार्ट करेगा? Can I say that? इसका कोड भी 3 से एंड करेगा, इसका भी कोड 3 से एंड करेगा, बट O से स्टार्ट कौन का करेगा? Now you see that चेस्ट के अंदर U हैशटैग 4 आया एंड कौन का अगर मुझे if I have to find out the code of this word, it will be ending with 3 and start with O. और इसके बीच में भी हैशटैग यूज हो रहा है. Now tell me what is the similarity between these two words? इन दोनों words के अंदर similarity क्या है? Look for the reason, the similarity between these two words. And the similarity between these two words will tell you the reason of the symbol. Come on, tell me. Chest और कौन word के अंदर similarity क्या दिख रहा है बच्चों आपको? अगर अभी भी नहीं समझ में आया, then you can pick another code, right? कोई ऐसा और कोड देखो जिसमें हैशटैग यूज हो रहा है. You see that? F hashtag 3. Now this must be of COME. Right? COME के अंदर 4 letters हैं. It would end with 3 and E है तो starting में F आएगा. F hashtag यहाँ पे यूज हो रहा है. Now tell me guys, इन तीनों words के लिए hashtag यूज हो रहा है. इन तीनों words में similarity नहीं दिख रहा है आपको अभी तक? Can't you see the similarity in these 3 words? Come on guys, क्या similarity है? Chest, con and come word के अंदर क्या similarity है? Why I'm using hashtag, right? The first alphabet. You see that first alphabet तीनों के अंदर C है. So can I say that जो symbols का reason है, that is a first letter, right? The reason of the symbol is a first letter. Am I right? Is it clear? So now looking at this, you can find out the reasons of the symbol, right? ये देखो, ये word के अंदर जो symbol use हो रहा है, the same symbol has been used over here, right? Both of these, right? ये कोड जिस भी वर्ड्स के लिए यूज होंगे उनका फर्स्ट अल्फाबेट सेम होना चाहिए. ओके, वी नो दैट दिस इज यूज्ड फॉर G. तो यहां से भी G से कोई वर्ड स्टार्ट होना चाहिए जिसके अंदर 5 लेटर्स हो, राइट? यू कैन सी दैट Gonzora, right? So can I say that the G word will give me a symbol of this, right? This will be the symbol of G, right? Everybody, is it clear? Now tell me what is the reason of hashtag? Hashtag का reason कौन सा अल्फाबेट है? C is the reason of hashtag. Now tell me the reason of factorial, right? ये जो symbol use हो रहा है factorial, ये यहाँ पे किस word के लिए use हो रहा होगा? It must be used for bank. So can I say first alphabet B would be the reason of the symbol? So B must be used for factorial. Now tell me what are the other symbols? Question mark. Question mark का symbol क्या होगा guys? Come on, tell me. Question mark के लिए कौन सा alphabet use होना चाहिए? Tell me guys. Question mark के लिए कौन सा alphabet use होना चाहिए? Number of letters हैं 5. 5 letter वाला word चाहिए. So 6 letter वाला word चाहिए. This is having 6 letters. This is having 6 letters. But it should be ending with O because ये P से start हो रहा है. So can I say tomato के लिए ये symbol use हुआ? So can I say question mark का reason क्या होगा? What will be the reason of the question mark? Question mark का reason will be the alphabet T. Is it clear? Symbols का reason find out करना बहुत जरूरी है because that will quickly solve the question, right? और कौन सा symbol use हो रहा है? You see that this symbol is also getting used. Now tell me, ये symbol use होने का क्या कौन सा alphabet होगा? Why we are using this symbol? This is ending with 2, तो 3 letter का होना चाहिए, तो eat के लिए हुआ. So can I say E के लिए ये symbol use हो रहा है? Am I right? Any other symbol? Right. One more symbol is there, that is this one. Steric sign, right? This is having 5 at the end of it. So 6 letter का word चाहिए. 6 letter के लिए है person, right? So P के लिए the letter P is giving me the symbol of star. Once you know this, the whole set is done. That's it. Now you can solve all the 5 questions in 1 minute.
And generally this type of coding decoding questions will appear in sets, right? एक एक questions में ही आएंगे जो all those coding decoding questions जिसमें आपको numbers का अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू लेटर्स का अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू का कोई कॉम्बिनेशन फाइंड आउट करना होता है, those questions are generally independent, उसमें एक एक टाइप के questions आते हैं. But this is a new type of coding and decoding questions which have started recently coming in exam and very very important type. बहुत कम बच्चों को इसके बारे में पता होता है. इनफैक्ट टेक्निक सॉल्व कर जो इसका टेक्निक है वो बहुत कम बच्चों को पता होता है, राइट? So it's very important that you know the technique of it, right? Approach, once you get to know the approach of it, then it is easy for all of you to solve this. Now we have to find out what is the code for this, right? Tell me guys, what is the answer of this question? ये इसका आंसर क्या आएगा? I can go for symbol first, या फिर आप numbers पे भी जा सकते हैं. ये 6 लेटर है तो ये 5 पे एंड होना चाहिए. इसमें नंबर ऑफ लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये 9 से एंड होना चाहिए. 5 तो ये 4 से एंड होना चाहिए. 5 9 4 यूज होना चाहिए. प्रॉब्लम है इसकी सारी ऑप्शंस में ही 5 9 4 यूज हो रहा है. देन आई गेस वी शुड बी गोइंग विद द सिंबल्स नाउ. एस के लिए जो सिंबल यूज होगा, ओके एस के लिए नहीं पता हमें, बट वी कैन फाइंड आउट. 9 के साथ ये साइन आना चाहिए, 9 के साथ ये सिंबल आना चाहिए. तो फर्स्ट ऑप्शन एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट. दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. एम आई राइट? बी वुड बी द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. डिड यू गेट इट गाइस? Now go for the next question, question number 2. Tell me guys, what will be the answer of this question? What does the code this stand for? वही same है, right? But as I told you कि these are the questions which will be coming in sets, right? So we are supposed to find out. Now in this question, coding is given and we are supposed to find out कि ये code किस words के combination में हो सकता है. See that ये 3 से end होने का meaning है, it should be having 4 letters, right? Come on guys, tell me what is the answer. You guys commented, have a look at it, try solving the answer. We will have a discussion in a minute. Option D. Okay, let's check it. 3 से end हो रहा है, so it should be having 4 letters. This is getting end with 9, so it should be having 10 letters. This is getting end with 6, so it should be having 7. I need that option जिसमें 4 10 और 7 letter होने चाहिए. इसमें 3 letters हैं, eliminate हो जाएगा. Right, this is having 4, right? Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें 11 है, so B is eliminated. Am I right? 4 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6. Okay, 7 letter का चाहिए, so ये भी eliminate हो जाएगा. The only option you will be left with D. इसमें 4 letters हैं, this is having 10 letters and this is having 7. Symbols को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, right? You do not need the reason of the symbols. You can see that numbers पे 3 options eliminate हो रहा है, right? So you should always try to go with an option elimination in these question guys, right? Because then you will be able to solve this question quickly. Got it? समझ में आया? This is how you are supposed to solve the question. Let me take you to another question. Now tell me guys, what will be the answer of this question? ये question का क्या आंसर आएगा? What will be the code for this one? Okay, code find out करना है. So try to go with numbers because I can see that options के अंदर numbers different है, right? एक में 8 9 7 है, एक में 7 8 6 है. So 2 options eliminate हो जाएंगे if I go with the numbers, right? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 7 आना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 8 आना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3, हाँ तो 6 आना चाहिए. 7 8 6 का आंसर बनेगा. AOD एलिमिनेट हो जाएगा. ओके, नाउ यू सी दैट इन दोनों ऑप्शन में से एक आंसर है एंड बोथ ऑफ दीज टू आर हैविंग अ डिफरेंट लेटर्स. तो इफ आई गेट टू नो द रीजन ऑफ द सेकंड जिसमें 8 आना चाहिए एंड में, उसका लेटर जो होना चाहिए वो E से एक ज्यादा होना चाहिए. दैट मींस माय आंसर शुड बी स्टार्टिंग विद F. तो F से C ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, सो C वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, राइट? गॉट इट? Everybody clear with this? Okay, now let's go through the next question number 4. Which of the following word is represented by this letter? क्या आंसर आएगा इसका? T% is 6. Look for it guys. T% is 6. 6 है, that means letters कितने होने चाहिए? How many letters should be there? 7 letters. Right? 3 4 7 ये ऑप्शन हो सकता है. 3 4 7 ये भी हो सकता है. 3 4 7 ये भी हो सकता है. ओके, नंबर्स पे तो नहीं जाएगा. सो ओके, व्हाट वी कैन डू इज, ये T आ रहा है तो इट शुड बी एंडिंग विद S. विच ऑप्शन इज एंडिंग विद S? C ऑप्शन इज एंडिंग विद S. C इज द करेक्ट आंसर. गॉट इट? राइट.
This is how you're supposed to solve this question. Let me give you another question to practice. Go for it now. Now you people know how to approach these type of question, guys. अभी आपको idea लग गया, right? What you have to go for is first decides कि coding के अंदर क्या use हो रहा है, right? For example, again, this is a combination of number, symbol, and letter. Try to know the reason of numbers first, because that is easy to find out. Generally, numbers का reason आपको easily पता लगता है. Once you know the reason of numbers, तो आप बता सकते हो कि कौन सा particular code किस लेटर के लिए यूज हुआ, किस वर्ड के लिए यूज हुआ. देन यू कैन लुक फॉर द रीजन ऑफ सिंबल एंड लेटर, राइट? तब सिंबल और लेटर का रीजन आपको फाइंड आउट करना चाहिए. नंबर्स पे सबसे पहले जाना है आपको. ओके, ट्राई टू डिकोड इट गाइस. कम ऑन, गो फॉर इट. Correct. It's quite easy to see that number of letters multiplied by 3 is the reason of the number. Correct. जो number use हो रहे हैं वो letter से 3 multiply होके use हो रहे हैं. Now you can find out कि कौन सा code किस word के लिए use हुआ है, right? So write down those words and the code in front of each other and try to know the reason of the letters and the symbols now. सिद्धार्थ, सी तो हो ही नहीं सकता है ना, राइट? क्लाउड, स्काई और डार्क में इट शुड बी जो नंबर्स होने चाहिए दैट शुड बी 15, 9 एंड 12. यस और नो? सी कैसे हो जाएगा? क्लाउड में 5 लेटर्स हैं, सो इट शुड बी हैविंग 15. स्काई में 3 लेटर्स हैं, तो इट शुड बी हैविंग 9. डार्क में 4 है, तो 12. तो 5, 9, 12 से आंसर नहीं आएगा. ओनली ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा. गॉट इट? ऑप्शन सी एलिमिनेट हो जाएगा. So बाकी सभी ऑप्शन में 15, 9, 12. So unless you know the reason of symbols and alphabets, you will not be able to answer the question, right? तो आपको symbols का reason निकालना ही पड़ेगा. और एक चीज आप ध्यान से ऑब्जर्व करो इस पूरे कोड के अंदर. Look at this whole thing. In the whole code, there are only 2 symbols getting used. Yes or no? Symbols कितने यूज हो रहे हैं? How many symbols you are getting used? डॉलर का साइन यूज हो रहा है, एट द रेट साइन यूज हो रहा है, and question mark use. That's it. Only 3 symbols are used. So there has to be something common in all these numbers, right? Because this whole code, in fact, ये question mark का symbol सिर्फ एक के लिए यूज हो रहा है, बाकी सभी के लिए at the rate और डॉलर का साइन यूज हो रहा है. Come on, go for it. Tell me what is the answer to the first question. Question is first question का क्या आंसर आएगा? C is definitely eliminated, right? I can definitely eliminate C. Alright. Number of vowels, right? That's correct. Symbol का reason is number of vowels, right? Look for it. Why? तो जो डॉलर का साइन है वो कितने सिंबल्स के कितने वॉवल्स के लिए यूज हो रहा है, और एट द रेट का जो साइन है वो कितने वोवल्स के लिए यूज हो रहा है. बी इज द राइट आंसर, राइट? लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन इट. सी गाइस, वंस यू नो द रीजन, राइट, इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि नंबर्स का रीजन क्या है. सो व्हाट आई शुड बी ट्राइंग टू डू इज, ये जो नंबर है, नंबर्स इज नंबर ऑफ लेटर मल्टीप्लाइड बाय 3. तो इसमें सबसे पहले आप वो कोड उठाओ जो कहीं और यूज नहीं हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस 18 से स्टार्ट हो रहा है, दैट मींस इट मस्ट बी हैविंग 6 लेटर्स. सो 6 लेटर वाला एक ही वर्ड है, पेस्ट्री, राइट? सो कैन आई से दिस वर्ड PASTRY is coded as 18 at the rate B. So ये 6 letters हैं, 6 multiplied by 3, we get to know the reason of 18. Okay. Now also, अभी मुझे find out करना है at the rate. Now look for some other number जिसमें at the rate use हो रहा है. At the rate use हो रहा है इसके अंदर. तो this must be for chef, right? ये इस वर्ड का ही कोड होगा. CHEF must be coded as 12 at the rate U, right?
This is having 4 letters. 4 multiplied by 3 is equal to 12. That's correct. Now let's look for the reason of this alphabet or this, at the rate. क्या reason हो सकता है इसका? Go for it. You see that? हाँ, और सभी में 2 ही symbols use हो रहे हैं. सभी पूरे कोड में there are only 2 symbols which are getting used. You can see that here. This whole number is made of one vowel. इसके अंदर एक ही vowel है A और इसमें भी एक ही vowel है E. Right? Okay. Let's try to justify it now. क्या ये सही है नहीं? Let's look for another reason. ये at the rate use हो रहा है, 9 से start हो रहा है, तो it must be for egg. तो E के लिए भी आपने 9 at the rate T use किया, 3 into 3. इसमें भी एक ही vowel है. So can I say one vowel means at the rate use होगा? Okay. And now you can also try to find out the reason of the alphabet. किसी को alphabet का reason दिख रहा है क्या? Anybody getting the reason of alphabets? Come on guys, tell me. Alphabet reason अगर आपको देखना है, always try to look for the first letter or the last letter, right? अगर कुछ नहीं होता इनकी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज लिख लो. B का अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू होता है 2. B अल्फाबेट में सेकंड पोजीशन पे आता है. Y का अल्फाबेट होता है 25. U का व्हाट इज द अल्फाबेट अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ U? U का होगा 21, राइट? और F का होता है 6. T का व्हाट इज द अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ T? T is 20. And G7. Now you can see the similarity. Last letter और इसके लास्ट लेटर के जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उनमें सभी का समीशन 27 आ रहा है. That means both of these two letters are the opposite of each other. Opposite means G is the 7th letter from the start and T is a last 7th letter from the last. Right? आप देखो अल्फाबेट्स में अगर आप स्टार्टिंग से अल्फाबेट्स सारे लिखते हो तो G का पोजीशन 7 आएगा और लास्ट से लिखते हो तो T का पोजीशन 7 आएगा. सो बोथ ऑफ दीज टू लेटर्स आर अपोजिट ऑफ ईच अदर इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम द स्टार्ट एंड द लास्ट. एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? राइट? सो यू गेट टू नो द रीजंस नाउ. इसके बेसिस पे अब आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो क्वेश्चंस के आंसर. राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर अगर मेरे को देखना है, राइट, फर्स्ट क्वेश्चन का अगर मुझे आंसर देखना है, व्हाट विल बी द आंसर फर्स्ट क्वेश्चन? राइट, आई नो दैट कि 15, 9 और 12 आना चाहिए, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. नाउ आई कैन गो फॉर इन सभी ऑप्शंस के अंदर देखो WWW, BBB, PPP सब जा रहा है. सो इज देयर एनी सेंस ऑफ लुकिंग एट द अल्फाबेट्स? अगर मैं अल्फाबेट्स की वैल्यूज लिखता हूँ, अल्फाबेट्स के नंबर्स लिखता हूँ, तो आई विल बी वेस्टिंग माय टाइम बिकॉज सारी ऑप्शन में सेम ही अल्फाबेट्स है. राइट? दीज आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ सिंबल्स. सो मेरे को सिंबल्स पे क्वेश्चन को सोल्व करना है. स्काई के अंदर कोई भी अल्फाबेट नहीं है और अगर कोई भी अल्फाबेट नहीं है तो यू नो दैट कि उसके लिए ये 15 at the rate G मस्ट बी यूज फॉर स्टेट और क्रिप्ट. राइट? हाँ, तो ये क्रिप्ट के लिए यूज हो रहा है. राइट? 15 क्वेश्चन मार्क. इसके अंदर कोई भी वॉवल नहीं है. सो नो वॉवल मीन क्वेश्चन मार्क. स्काई के अंदर कोई वॉवल नहीं है, सो दैट मीन्स इट शुड बी हैविंग अ क्वेश्चन मार्क. तो इसमें 9 के साथ क्वेश्चन मार्क यूज होना चाहिए. सो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. ये ऑलरेडी एलिमिनेट है, ये भी एलिमिनेट. सो बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन. गॉट इट? This is how you are supposed to solve this question. Everybody done? Right? Now tell me what is the answer of this question. What will be the code for loud cry kid? Come on, go for it. Give me the answer, guys. Loud cry and kid, guys. What will be the answer of the question? Comment your answers. Comment your answers. B बन रहा है. D. Okay, see that. 4 letters हैं. It would be having 12. 3, 9, 3, 9. 12, 9, 9 चाहिए मेरे को. 12, 9, 9. तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. बाकी सब में 12, 9, 9 है. लेट्स गो विद ओके क्राई. इसमें कोई भी वॉवल नहीं है तो इसमें क्वेश्चन मार्क आना चाहिए. मिडिल वाले 9 के साथ क्वेश्चन मार्क आना चाहिए. ओके, इन तीनों में क्वेश्चन मार्क है. इसमें एक ही वॉवल है तो इसमें एट द रेट आना चाहिए. तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. राइट? एंड दिस इज हैविंग 2 वॉवल, तो इसके साथ कौन सा सिंबल आना चाहिए? 12 के साथ डॉलर आना चाहिए. 12 के साथ डॉलर, 9 के साथ क्वेश्चन मार्क, 9 के साथ. ओके, ये भी सही चल रहा है. सो मुझे लास्ट अल्फाबेट्स पे ही क्वेश्चन को डिसाइड करना पड़ेगा. राइट? फर्स्ट और बी तो सेकंड एलिमिनेट हो रहे हैं.
सी एंड डी के अंदर यू सी दैट इन दोनों के अंदर ये सेकंड वाले में डिफरेंट अल्फाबेट यूज हो रहा है. Y का कोड इज व्हाट? Y इज एट 25. तो इसके साथ 27 का सबमिशन बनाएगा 2. सो 2 पे अल्फाबेट आता है B. सो B आना चाहिए, राइट? सो B मीन्स D वुड बी द करेक्ट आंसर. गॉट इट? ओके. Do the next question, guys. Come on. What is the code for spy team lost? I guess you people will be able to do it now. First option direct eliminate हो जाएगा. I guess we should go with the symbols here. यहाँ पे question mark आना चाहिए, यहाँ पे डॉलर आना चाहिए और यहाँ पे at the rate. Question mark dollar at the rate. Question mark dollar at the rate. तो A and C eliminate हो रहा है. In fact D भी eliminate हो रहा है. So B is the right answer. Got it? Right. So guys, this is a type of coding and decoding question that you must do. This is just one type of coding decoding. Coding decoding के बहुत सारे types of questions आते हैं. I'll be taking more lectures on coding and decoding. This is just one type that I have covered. In the description part of the video, you will be having a Telegram group link to join my Telegram group, where you will be getting the update of all of my live sessions, right? So all these live sessions are scheduled one day earlier. So we'll be getting the link of all of these sessions in that Telegram group. Join the Telegram group. You can also ask your doubts, and you guys can call at this number for any counseling for your CAT and MBA entrance exam preparation. आप किसी भी CAT या MBA entrance exam की preparation कर रहे हो, right? किसी भी MBA entrance exam की preparation कर रहे हो, you guys can call at this number. You can book your slot for one-to-one mentorship. I'll try to help you with your exam preparation as much as possible. And please subscribe to the channel to get regular updates and classes. Thank you for joining the session. See you in the next class, guys. Take care. Thank you.